Hello बच्चों, welcome to the next video. In this video we will discuss about exercise 1.2 second question का part 3 which is the same as yesterday and the day before yesterday. It is asking find the HCF and the LCM of the following pair of integers and verify that the LCM and HCF इसका जो product होगा will be equal to the product of the two numbers given in the question, that is 336 and 54. So easy, simple. Let's straight dive into the sum and let's see what exactly it's asking. So पहले निकाल लेते हैं HCF. So HCF निकालने के लिए क्या करना होगा? Prime factorization. So in this case it will be 16 and 8. फिर उसके बाद 284, 242, 221, 3 into 7. 7 तो आ गया प्राइम नंबर और इसके बाद कोई हो नहीं सकता सबसे छोटा, तो इट्स अनडिविजिबल एनीमोर. नाउ लेट्स डू इट द सेम वे फॉर 54. 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3. दैट्स इट. नाउ इन दोनों में से डिराइव करना होगा. पहले तो HCF will be equal to लिख लेते हैं. फैक्टर्स क्या क्या कॉमन है. ओके, सो HCF पहले निकाल लेते हैं. फॉर 336 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, and for 54 it is 2 into 3 into 3 into 3. सो कॉमन कितना टाइम्स क्या है? एक 2 कॉमन है और एक 3 common है. So what does HCF become? HCF becomes 2 into 3, that is 6. तो ये हो गया HCF. Now let's find the LCM in the same way. For the LCM, what we have to do is from here, common क्या चला गया? 2 common चला गया, 3 common चला गया. So that means पहले कॉमन्स को लिख लेते हैं. 2 into 3, that was the HCF. बाकी क्या रह गया? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into इधर है 7 और नीचे है 2 3. करते हैं मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका रिजल्ट आया 3024. सो दैट इज द LCM. सो HCF निकल गया हम लोगों का, LCM भी निकल गया. अब क्या करना है? पहले तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स को देख लेना है कितना होता है. सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, दैट इज डू सिंपल मल्टीप्लिकेशन. 24, 4, 13, 0, 8, 16. So 4, 4, 1, 8, 1. और अभी देख लेते हैं. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन इंटीजर्स. नाउ लेट्स वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ द HCF and the LCM. So it will be 3024 into 6. So 6 4s are 24, 12, 14, 1, 0, 1, 3 6 are 18. So आया कि नहीं दोनों बराबर? So are they same? Yes they are. So now what we can write is, we can simply write, ये मैंने पिछले 2 सम्स में नहीं बताया था, इसमें बता देता हूं. When we have done this proof, आजू बाजू में करके दिखा दिया कि देखो भाई दोनों सेम है. अब बस नीचे लिख देना है as asked to verify the product of the HCF and LCM is equal to the product of the
two given integers. बस इतना ही करना है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है. That's enough. ठीक है? I hope you like this video. It was easy to understand. Give a thumbs up to this video, like this video that is, and also subscribe to my channel for further maths tutorials and detailed explanations for all your sums from your class 10 NCERT.